clinical manifestations. What are the signs and symptoms of atrial septal defect? इसकी clinical manifestations कौन कौन से होते हैं? यूजुअली जो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है इनमें हम क्या देखते हैं, जो फर्स्टली हम देखते हैं जो इसकी टाइप्स है, दैट इज ऑस्टियम स्कैंडियम, ऑस्टियम प्राइमम एंड साइनस वेनोसिस एएसडी. जो ऑस्टियम स्कैंडम एंड साइनस वेनोसिस एएसडीज होते हैं, दैट आर एसिम्प्टोमेटिक. जो ऑस्टियम स्कैंडम एंड साइनस वेनोसिस एएसडीज होते हैं, दैट आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक. जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, दैट आर ड्यू टू ऑस्टियम प्राइमम. जो मैनिफेस्टेशंस आती है वो किसकी वजह से आती है? ऑस्टियम प्राइमम एएसडी में मैनिफेस्टेशंस आती है, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएटेड डिफेक्ट्स. जो कौन कौन से अब साइन एंड सिम्टम्स आते हैं? द चाइल्ड में हैव रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, dyspnea, poor weight, also bulging of chest, cardiac enlargement, and CCF. These are the signs and symptoms that are due to ostium primum ASD. जो ये sign and symptoms है किसकी वजह से होते हैं? ostium primum ASD. यूजुअली जो ostium scandum and sinus venosus ASDs है इनमें sign and symptoms नहीं होते हैं. अब कौन कौन से sign and symptoms होती है due to ostium primum ASD? That is the child is having recurrent chest infection, dyspnea, poor weight gain, जो चेस्ट है वो बल्ज हो जाता है, कार्डियक एनलार्जमेंट होता है, एंड CCF स्टैंड्स फॉर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या हो जाता है? जो हार्ट होता है दैट इज अनेबल टू पंप ब्लड. These are the signs and symptoms of atrial septal defect. Now, diagnostic evaluation. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे की जाती है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को कैसे डायग्नोज किया जाता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है दैट इज डन बाय ऑस्कल्टेशन. Auscultation also cardiac catheterization and X-ray. In auscultation से हम क्या देखते हैं? ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड्स. ऑस्कल्टेशन में हम क्या देखते हैं? हार्ट साउंड. दीज आर इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक अप्रोचेस. इन कार्डियक कैथेटराइजेशन की जाती है. कार्डियक कैथेटराइजेशन से क्या डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है? इट डिमॉन्स्ट्रेट्स एबनॉर्मल ओपनिंग. कार्डियक कैथेटराइजेशन demonstrates abnormal opening
that is between the atrium, that is between right and left atrium. And oxygen saturation, also oxygen saturation in right side of heart, ये हमें पता चलता है बाय कार्डियक कैथेटराइजेशन। जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, इससे हमें पता चलता है जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट, एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट में। आल्सो जो थर्ड वन है दैट इज द एक्सरे, दैट्स द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आल्सो indicates right atrial and ventricular hypertrophy, right atrial and ventricular hypertrophy and pulmonary artery enlargement। चेस्ट एक्सरे जो है that reveals right atrial and ventricular hypertrophy plus pulmonary artery enlargement. By this, diagnosis is done. After diagnosis, when the defect is confirmed, management is to be given to the patient. Management, इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट है? There is, इसके लिए भी सर्जिकल मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? जो ये डिफेक्ट है दैट इज सर्जिकली क्लोजर, लेकिन सर्जिकल क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट जो होता है, सर्जिकल क्लोजर ऑफ डिफेक्ट दैट इज प्लानड in early childhood। Surgical closure of the defect जो होता है that is of the ASD, it is planned in early childhood। क्यों इसको प्लान किया जाता है in early childhood? To prevent further complications, to prevent further complications, that is why it is planned in early childhood। CCF, but जो CCF होता है congestive cardiac failure, that should be managed medically। Managed medically। Also, antibiotic prophylaxis is also necessary during dental procedures if needed। सर्जिकल क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट जो इसमें होता है, इसको हम क्या करते हैं, जो ASD है इसको हम सर्जिकली क्लोज करते हैं, लेकिन इसके लिए हम पहले ही प्लान करते हैं चाइल्डहुड में। क्यों हम प्लान करते हैं? ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रिवेंट हो सके। जो ये डिफेक्ट है इसको कैसे रिपेयर किया जाता है? सर्जिकली रिपेयर जो ये हम करते हैं इस डिफेक्ट को, ये हम रिपेयर करते हैं बाय, रिपेयर इज डन बाय suture, suture closure
pericardial patch repair by open heart surgery. जो ये डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, जो ये एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, इसको क्या किया जाता है, सर्जिकली इसको क्लोज किया जाता है। जब हम इस डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं, रिपेयर ऑफ डिफेक्ट, जो ये रिपेयर ऑफ डिफेक्ट होता है, इट इज़ डन बाय सूचर क्लोजर। वहाँ पे हम सूचर्स के जरिए इसको क्लोज करते हैं या पेरिकार्डियल पैच वहाँ पे हम लगाते हैं। लेकिन जो हम ये सूचर क्लोजर करते हैं, इस एबनॉर्मल ओपनिंग को बाय सूचर्स क्लोज करते हैं या पेरिकार्डियल पैच हम वहाँ पे लगाते हैं एट द ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग। लेकिन ये हम किसे करते हैं, जो ये सर्जरी होती है, इट इज़ डन बाय ओपन हार्ट सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, supportive nursing care is too much important. Supportive nursing care, it is very important. This is very important and it must be followed. This is the atrial septal defect.